हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट है। हिज नेम इज अभिमन्यु बाय द वे। आज मैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हूँ। इसकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार। ही इज अ फ्रेशर, नंबर 1। नंबर 2, इसका 2 साल का गैप भी था। नंबर 3, इसका कैट बहुत अच्छा नहीं गया। कैट में 70% लाया था, पर बंदे ने फाड़ा जैट में। तो यार मैं आपको ऑलवेज कहता हूँ ना, एक एग्जाम अगर खराब जाता है कोई लोड नहीं है, आप दूसरा एग्जाम फोड़ सकते हो। जैट में गॉट 96.62 मेरे ख्याल से। दैट्स ओवरऑल 97, बहुत बड़ा नंबर है जैट के लिए। एक्चुअली इज अ जैट टॉपर बाय द वे। एंड एक्सिलरी का कॉल था, बाकी बहुत सारे कन्वर्ट्स भी थे इसके। एंड फाइनली ही चोज GIM। उसकी स्टोरी सुनेंगे। अभिमन्यु, वेलकम ऑन बोर्ड। आई एम हैप्पी टू हैव यू। आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू के 96 पे क्या हुआ, एक्सेल कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, बाकी कौन से कॉल्स आपके कन्वर्ट हुए, एंड 2 साल का जो गैप था क्या उसने आपको बॉदर करा। ठीक है, ओवर टू यू। Okay, so from the beginning, my name is Abhimanyu Tyagi. I have done my undergraduation in BTech, Computer Science Engineering. Okay. After that, I had a 2-year gap. But 2-year gap के बाद, I decided to go for an MBA. So I started preparing for my CAT, XAT, and all these entrance exams. So of course, बहुत bother हुआ क्योंकि they used to say कि अगर gap है, so it might affect your interview process and all that. But तुझे आज लगता है यहाँ पे बैठ के कि gap matter करता है? No, sir. Absolutely Like, yes. Very honestly, gap matter नहीं किया. Because today all the institutes are looking towards your hard work. What hard work you have given and what is your main purpose. What is your reason for pursuing an MBA. So वही था sir. फिर I started preparing for my entrance exams. I gave CAT, but CAT में I not do that well. So as a student he is brilliant because CAT में क्या था, इसका verbal इसने फाड़ा था, Quants भी इसने फाड़ा था, but DALR में इसका परसेंटाइल थोड़ा सा कम हो गया। अपना जरा ZAT का परसेंटाइल बता देना, सेक्शनल। So in ZAT I had in verbal 99 percentile. That's a big number. In decision making I had 90 percentile. 98 close to or 90? 90 exactly. 90, अच्छा, Yes, okay. And in like Quants I had 77 percentile. वाह, मतलब एक सेक्शन अगर तुम फाड़ते हो ZAT में तो तुम्हारा बहुत बड़ा जंप आ सकता है, बिकॉज वर्बल में 99 था, बाकी दोनों में 70 से 70 था, तो वो वहां पे काम बन गया। ऑसम। सो व्हाट आर कन्वर्ट्स यू हैड? आई मीन एक्सेल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू स्टफ? अच्छा, ओके। So Excel I had the interview for HR. But इतना I am not sure क्या हुआ, but it was a very amazing interview. The panel was amazing. But वो I got a regret letter in the end. Then I had converts in IMT Ghaziabad. Okay. Then I had in TAPMI. TAPMI, okay. Yes, in V School. Wellinger Mumbai. Mumbai. Yes, then GIM and some more. Okay, so you had good converts, है ना? IMI is good. Sorry, TAPMI is a good brand. Wellinger is a good brand, definitely, right? Definitely. I would love to understand कि आपने ZAT के थ्रू GIM को ऑप्ट क्यों किया? रीजन था GIM को ऑप्ट करने का, एंड आपका स्पेशलाइजेशन भी बता देना। Alright, sir. So समर लगा है ना आपका? Yes. हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। Continue. Definitely, sir. So, sir, for me, the main reason for GIM was कि at that time, sir, आपके videos और सब, sir, everyone was like कि GIM का industry में नाम बहुत अच्छा है इस time। True that. GIM is doing really well in the industry. It's marketing domain में बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, by the way, अभी finance भी काफी pick up कर रहा है। Exactly, sir. Nice. So, sir, मेरे को marketing में opt करना था, तो for me GIM was a very good choice. So how's life in GIM so far? Life in GIM has been a mix of hectic, fun, and learning. Totally, like MBA journey was... So you genuinely opted GIM for marketing, या फिर गोवा में आके चिल मारना था? एंड पढ़ाई करते हो तुम लोग? So GIM is full of learning. Like GIM के आप डायरेक्टर से बात करोगे तो the very first thing he will tell you is that learning never stops at GIM. Leadership तो काफी strong है, no doubt about that. How's the peer group? Like अंदर आके लगता है कि नहीं यार, बंदे हैं, smart है बच्चे, competitive है? बहुत ज़्यादा competitive है. So it's dynamic और diversity बहुत ज़्यादा. Okay. Like GIM is thriving on diversity. अभी you will find from agriculture, from engineering, from biotech, from like doctors to all sorts of backgrounds. I met a couple of students. They are from the dental background and sort of a non-engineering kind of a background. Non-engineering. Cool है. How's the campus here? Campus is great. Like सब facilities हैं. We have like swimming pool. अच्छा. It's a rarity. गोवा में होने के बाद we don't go to the beaches. हाँ, because इधर ही सब कुछ मिल रहा है. True that. Now, Abhimanyu, if you were to give, let's say 2 cents advice to the generation, like which is the next batch, which is going to be your junior, है ना, और जो लोग GIM को टारगेट कर रहे हैं, है ना,
क्या एडवाइस दोगे आप उनको कि GIM क्यों लेना चाहिए आपको? So for those who are preparing this time and are targeting GIM, I would tell them that GIM has students who have left IIMs, who have left IMT, who have left IMI, and big brands to come to GIM. So GIM is a upcoming brand. GIM is on a very fast rate growing, and the जो IIM का जिक्र करा ना अभिमन्यु ने, that's predominantly new IIMs and the baby IIMs. definitely So I have seen lot of students out here जो न्यू और बेबी IIMs को छोड़ के आए हैं with a very good percentile 97, 98, 95 percentile आपको बहुत ज़्यादा चंक दिखेगा. So I think that's the good thing about GIM मेरे ख्याल से. definitely. So we have a peer group, like it's very competitive, but at the same time we learn so much from each And other. helpful also. So much helpful. Nice. There is a good combination of freshers and work ex वाला बच्चा लोग Yes, यहाँ पे. sir. So, sir, we have a very good mix of freshers and work ex. We have people who are like they have just given their exams and their results are not out, and they are in GIM. And we have people who have worked for 2 to 4 years and they are also in GIM. Fantastic, Yes, fantastic. By the way, the good news is that he has been placed. We will not discuss the name of the company. We will not be able to discuss the stipend. Industry, बता सकते हैं कौन सी industry Yes, में है? FMCG. FMCG, that's a dream job for marketing, isn't it? Yes, sir. Awesome. अब FMCG वाले ना तगड़ा पैकेज देते हैं. So you must have got a very good stipend also. And PPO मिलेगा तो वापस एक बार इंटरव्यू कर लेंगे. So guys, that's it from my side. Signing off from GIM. Thank you so very much, Abhimanyu, Thank you for so your much, sir. time. Yes. And guys, stay tuned to Seduce Mentors. Do hit like and subscribe to the channel. Thank you.